Many new products are coming into the market, right? Which says that we can get 10,000 new hairs in 3 months. Maybe this is absolutely not true. Again, there's nothing can that time. Now I'm thinking why it's very important to take advice every time from the doctor. क्या ऐसा भी है कि अगर किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो लाइफ के लिए भी डेंजर हो सकता है? 3-4 डेथ्स इंडिया में ही रिपोर्टेड। बिल्कुल। अब वो अनरेगुलेटेड जगह पे वो तीनों डेथ इन्फेक्शन से हुए। लॉट ऑफ पीपल आल्सो थिंक अबाउट दिस वे आल्सो कि देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट इन द मार्केट बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वी कांट गो फॉर इट। एक हेड एंड शोल्डर में मिलता है, इट्स अ वेरी नाइस शैम्पू बाय द वे, 150-180 रुपीस, और वी गेट अ वेरी फैंसी समथिंग कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, 2000 रुपीस, राइट? व्हाट यू आर पेइंग एक्स्ट्रा इज So first of all, thank you for being part of Impact Stories. My pleasure. सबसे पहला क्वेश्चन ना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा ये क्वेश्चन कि काफी लोग ना आज में टर्की की बात करते हैं। You should go to Turkey for transplant. Yes. तो ये ऐसा है या फिर ये मिथ ही है? नहीं, एक्चुअली ये ट्रू है। अच्छा। बिकॉज अभी वर्ल्ड में 2 हब्स हैं अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट, फील्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। वन इज इस्तांबुल टर्की, अनदर इज न्यू दिल्ली इंडिया। सो सेकंड इज न्यू दिल्ली इज द बिग हब. अच्छा. For hair transplant. Okay. So, like till 4-5 years back, when Turkey was not the center of attraction, India was. Okay. Because we do a lot of high quality hair transplant at a much cheaper cost than most of the Western countries. So people from America, Canada, USA, Canada, UK, and then Australia, New Zealand, they used to come to India for their hair transplant. Then Turkey came in post-COVID, and they're also doing good work. Achha. So people who are coming from, let's say, the western part of the world, UK, makes more sense for them to go to Turkey rather than India if their only, let's say, motive is to do a hair transplant. However, of late, because of this boom, everybody wants to jump in the bandwagon. So Turkey में क्या हो गया? It has become a very, very unregulated space. Very, very unregulated. Like in India, we have watchdogs. We have the National Medical Council. बिल्कुल. We have the Supreme Court, which are active. When it comes to hair transplant, they're active because this is something which has become very popular. But Turkey में ऐसा नहीं है. Turkey में watchdogs नहीं है. अच्छा. Turkey में so the government there is supporting them because it's bringing like foreign revenue. Obviously. So they're supporting them and it's like do whatever you want. And 90% of the clinics that you see on Instagram, Turkish clinics, do not even have a doctor performing the procedures or technician based. People get lured by it because it's in Europe, nice, good for tourism, and cheaper cost because there's no doctor involved. Now there is no regulatory. They can do whatever you want. Because I'll tell you an example. Because these days, legit Turkish doctors have become very active, and we have a lot of international WhatsApp groups of doctors. So of late, these bad stories from Turkey are coming. Achha. Very recently, an American doctor shared a story that a young guy, I think 22-23-year-old, went to Turkey for his beard hair transplant. It was such a boysed up job that he went into depression. Total depression. Achha. The parents tried to contact the clinic there, but because there was no doctor, there was no reply. They tried to file case, but because the government is supporting, nothing happened. And then eventually the guy committed suicide. Oh my. So depressed he was. We keep getting pictures in our groups that yesterday only somebody posted on Instagram that 10 days back I got it in Turkey. Now I'm trying to contact them. Nothing is happening. So you please help me. So he developed necrosis of the scalp because some wrong chemical was used and very badly done hair transplant. So that is the reality. So what they show on Instagram most of the times is little untrue. Right. And फिर वहाँ पे कुछ और होता है. But there are legit doctors. There are legit doctors in India. So when you compare these two countries, by and large, ये ठीक है, दोनों are good places. But in Turkey, black market is a major. शायद आपने तभी बोला था कि rather than looking for other country options, you should prefer India. America नहीं, England नहीं, Dubai नहीं. Go to, try your own country. See, if you're an Indian, if you live in India, then it's a no-brainer. You must do a hair transplant in India because you're getting high quality. लगता नहीं UK जाएंगे तो better होगा. These are not good places to do a hair transplant. That's all. And why to fly to Turkey? Even like patients from Australia, New Zealand, tell them India is much better geographically for you to come to here. But if you find a good doctor in Turkey, you are coming from USA or something, then yes, sure, you can explore the idea. But be very careful when you are choosing a clinic in Turkey because black market is a major problem. Mushroom clinics there. Mushroom. एक ना मुझे जो लगता है, मतलब मेरा खुद का एक लुकआउट है कि क्या होता है, you go for hair transplant.
उसके बाद भी ऐसा हो सकता है वो बाल आपके चले जाएं? बहुत रेयर है, ये बहुत ही रेयर है। तो नॉर्मली जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर कि कौन सा डोनर चूज किया जा रहा है। सो नॉट ऑल हेयर ऑन योर हेयर आर परमानेंट, और जस्ट बिकॉज वो ट्रांसप्लांट कर दिया गया इससे वो परमानेंट नहीं होता। यू हैव टू चूज द राइट प्लेस। सो इफ आई डू अ ट्रांसप्लांट टेकिंग आउट हेयर फ्रॉम टू हाई ऑन द स्कैल्प या टू लो, देन वो हो सकता है 3-4 साल बाद चले जाएं। तो अगर इन थोड़ा सा लो क्वालिटी क्लिनिक या जब थोड़े से नए लोग करते हैं तो ये हो जाती है वाली गलतियां, बिकॉज इट टेक्स टाइम, इट्स अ वेरी लॉन्ग लर्निंग कर्व। तो उसमें टाइम लगता है टू गेट टू नो व्हाट इज द राइट प्लेस, एंड देयर इज नो, इट्स ह्यूमन बॉडी, सबकी बॉडी अलग है, देयर इज नो सेट स्टैंडर्ड कि यही इज द राइट प्लेस। तो वी सी एवरी पेशेंट हैज अ डिफरेंट राइट प्लेस। सो ट्रांसप्लांट इज नॉट समथिंग जो हम बस एक YouTube वीडियो पे देख लिया कि बाल निकालना और लगाना था, लोगों को इतना ही पता है, उतना ही लगता है कि यार इसमें क्या है, बट ट्रांसप्लांट इज मच मोर देन दैट। और ट्रांसप्लांट का लर्निंग कर्व इतना लंबा है कि इफ आई डू समथिंग टुडे, वो सही था या गलत था वो मुझे 1 साल बाद पता चलेगा। 1 साल बाद तभी वो रिजल्ट आता है। तो आपने 1 साल पहले जो किया था, क्या वो सही था या गलत था, यू नॉट गोइंग टू, तब तक किसी को याद नहीं रहता। ट्रांसप्लांट में इसीलिए कम लोग हैं जो अच्छा करते हैं, बिकॉज दे हैड दैट काइंड ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, उनका वो पैशन था अच्छे रिजल्ट्स या टू डू समथिंग गुड फॉर देयर पेशेंट। हम एक रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, इसमें हमने ये नीडल यूज की थी, वो वाला ब्लेड यूज किया था, इसमें ये लिक्विड इतने मात्रा में डाला था। तो वी कीप ऑल द रिकॉर्ड्स एंड देन वी कीप सीइंग, जजिंग कि अच्छा ठीक है ये अच्छा था, इसमें देखो ये किया था, एंड सो वी कीप चेंजिंग अ टेक्निक। सो हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट अ एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। बट लुक एवरीबॉडी थिंक्स दैट इज अ इजी जॉब। क्या बिकॉज देखो कोई इसमें कोई भयंकर साइड इफेक्ट तो नहीं है, बिल्कुल। तो जिसको बोलते हैं कोई खतरनाक साइड, मतलब इज नॉट मच रॉन्ग दैट यू कैन, ये हो सकता है रिजल्ट नहीं आए, रिजल्ट वर्स्ट दैट कैन हैपन, बट यही बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। रिजल्ट आया सबसे बड़ा, मतलब आप सोचो कि यू आर स्पेंडिंग मनी, यू आर टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट, और फिर आपका रिजल्ट नहीं आया, इट कॉज अ डिसअपॉइंटमेंट। सी इन द बेस्ट ऑफ द हैंड ये सब चीजें हो जाती हैं, बट इफ इट हैपेंस टू फ्रीक्वेंटली तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ क्या ऐसा भी है कि अगर किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो लाइफ के लिए भी डेंजर हो सकता है? ऐसा नहीं होता। दो देर लोग सोचते हैं ऐसा भी, वही लगता है, लोगों लगता है ब्रेन पे सर्जरी हो रही है, ब्रेन पे नहीं हो रही है, सर की स्किन पे हो रही है, नॉट डीप, तो उसमें रिस्क तो जीरो है। लेकिन अब 3-4 डेथ्स इंडिया में ही रिपोर्टेड। बिल्कुल आई डिड अ शो ऑल्सो, देखो अब वो अनरेगुलेटेड जगह पे वो तीनों डेथ इन्फेक्शन से हुई। इन्फेक्शन अब आप अपने सैलून में कराते हो ट्रांसप्लांट जहाँ पे कोई किसी तरह की स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं हो रही है, वो इंस्ट्रूमेंट पता नहीं कितने लोगों में ऑलरेडी यूज हो चुका है, एनेस्थीसिया का देयर इज नो रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ एनेस्थीसिया कितनी, तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। थिंक ऑफ इट लाइक ड्राइविंग। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्राइविंग इज सेफ, क्या जवाब है आपका? ऑब्वियसली मतलब वो तो नहीं, बहुत लोग मर जाते हैं बिल्कुल। ट्रांसप्लांट में तो 3 लोग कि अनफॉर्चुनेटली, ड्राइविंग में तो ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, बट वो तब होता है जब यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग, आप एकदम बेहोश होकर चला रहे हो, बिल्कुल, तब आप ऐसा एक्सीडेंट करते हो दैट उसमें जा। तो ट्रांसप्लांट इज लाइक वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो टू चूज द राइट डॉक्टर फॉर दिस। राइट डॉक्टर, राइट क्लिनिक, यू हैव टू सी इट इज अ डिसीजन दैट यू आर टेकिंग, क्योंकि आज हम लोग सस्ते के पीछे ज्यादा भागते हैं, बस नेट पे फोन पर क्या है वो गलत है। हम लोग सबको ये करते हैं कि आप आओ, देखो, समझो, अच्छा लगता है, मतलब आज कल करना है ऐसा डिसीजन मत, बिल्कुल मन टू डिसाइड। और कोई साइड इफेक्ट में इसके? साइड इफेक्ट नहीं है, और परेशानियां होती हैं। अच्छा, जैसे माइल्ड स्वेलिंग कम्स किया, थोड़ा सा दर्द होता है, जो भी माइनर आप मेडिकेशन लोग एंटीसाइकोटिक देते हैं, पेन किलर देते हैं, द थिंग्स गेट टोटली अंडर कंट्रोल। पहले हफ्ते का केयर होता है, व्हेन यू डोंट वांट टू स्मोक, यू हैव अल्कोहल, ज्यादा पसीना वगैरह ना आए, दैट्स माइनर बेसिक केयर। इसमें रिस्क सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि ब्रेन में कुछ खराब था, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन्फेक्शन कोई बहुत खतरनाक हो जाए, माइग्रेन डेवलप ना हो जाए, बिल्कुल। So if done properly, it's totally safe procedure. और क्या मतलब स्मोकिंग भी बहुत बड़ा रीजन है कि अगर हेयर लॉस हो सकता है? हाँ, अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो, आपके अंदर मेल पैटर्न हेयर लॉस है, और साथ में आपकी लाइफस्टाइल भी खराब है, यू आर स्मोकिंग टू मच, अच्छा, आप अपना डाइट अच्छा नहीं ले रहे हो, तो आपका हेयर लॉस जल्दी हो जाएगा। ओके। ऑन द अदर हैंड, इफ यू डू नॉट हैव द जीन्स ऑफ बॉल्डनेस, नो मैटर हाउ मच यू स्मोक, आपके लंग खराब हो सकते हैं, बट आपके हेयर पे इतना डैमेज नहीं होगा, बिकॉज स्मोकिंग, डाइट, दिस, ये इनका 10% रोल होता है इन हेयर लॉस। अच्छा, इट्स हैज अ रोल बट नॉट अ सिग्निफिकेंट रोल। तो ये है, मैं अपने पेशेंट को समझाता हूँ कि इफ यू हैव द बॉल्डिंग जीन और आप हिमालय पे जाके रहते हो, क्लीन एनवायरनमेंट एंड विद अ ब्यूटीफुल वाइफ, आपका फिर भी हेयर लॉस होगा, बट शायद 50 में होगा। बट इफ यू लिव इन दिल्ली विद ऑल द स्ट्रेस, वो 20s-30s में होगा। तो ये होता है। सो दैट्स हाउ इट। सो टुडे देयर इज वन टॉक ऑफ द टाउन आल्सो, जैसे हम आदिवासी की बात भी कर रहे थे ना, हेयर ऑयल की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या मैजिक टूल है भाई कि जो कोई भी यूज करेगा, कैसी भी स्कैल्प हो, और सबके बाल उग जा रहे हैं, ऐसा है? नहीं, देखो एक्चुअली हेयर लॉस में देखो कोई मैजिक नहीं होता।
एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो नए रूट्स बना दे. वो पॉसिबल है. इवन हेयर ट्रांसप्लांट में हम नए रूट्स नहीं बना रहे, कहीं की रूट निकाल के कहीं और लगा रहे हैं. बिल्कुल. तो ऐसा कोई भी तेल नहीं है. लोग इस पर रिसर्च चल रही है, स्टेम सेल्स एंड दैट, फिर भी वो नहीं हो पा रहा है. तो तेल से नहीं होता है. इनफैक्ट आई हैव मेट द प्रोमोटर्स ऑफ आदिवासी ऑयल. दे आर वेरी नाइस पीपल, दे कम फ्रॉम अ कम्युनिटी एंड गाँव में बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल बनाया, दे कर रहे हैं. तो बात करके उनसे यही लगता है कि ठीक है, इट इज नाइस, में जड़ी बूटियां हैं, तो आपका माइनर हेयर फॉल है, उसको यूज करो, आपको शायद रिजल्ट मिले. आपका सीजनल फॉल है तो आपको यूज करो, आपको रिजल्ट मिले. पर वो सब तो टॉल सीन जहाँ पे आने लगते हैं ना फॉर मार्केटिंग पर्पसेज, कि बॉल्ड हेड पे बाल रुक जाएंगे एंड 15 दिन में शर्तिया इलाज हो जाएगा. देयर इज नो शर्तिया गारंटी विद ह्यूमन बॉडी. और तेल से होने लगता है. तो ऑफकोर्स अब तक उनको नोबेल प्राइज मिल चुका होता, so like millions of dollars being pumped into hair loss industry. तो नहीं होता, लेकिन आपका minor hair loss है तो आप यूज करें. But why do you think the lot of celebrities coming forward to promote it? यार मतलब इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे मतलब this is the magic tool. अरे this is advertising. अब there is a big joke going on. I mean, if I can take the name on Juhi Chawla, that she promotes a certain brand of hair oil और घने लंबे काले बाल, but husband is bald. Of course, baldness is the choice. I may not want to grow hair, True. but if it was that easy, then sir would have applied hair oil. So these are endorsements. These are paid endorsements. In their influencers' job is like that's their mode of working. So they are paid for it. They talk about it. So वैसे अगर मैं ऐसे पूछूं कि तो कितना ऑयलिंग आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? वैसे बहुत लोग कहते हैं नहीं तेरे बाल इससे जड़े तो ऑयलिंग नहीं करता, कहते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं. बट इज इट that important? So that's a very good question, because that's the biggest myth going around, at least in our continent, कि oiling is must for the scalp. It's not must. Oil जितना scalp को चाहिए वो बना देता है. अच्छा. There's another myth going on that which we have also been taught, that when somebody asks, a patient asks, you must tell that no, don't use hair oil. This is also wrong. So hair oil, जैसे हम कोकोनट ऑयल यूज करते हैं या बादाम का तेल यूज करते हैं, it does not have medicinal property. ये रूट्स में जाके रूट्स को पोषण नहीं देता. अच्छा. So क्योंकि ऑयल मॉलिक्यूल इज हैवी, वो नहीं पेनिट्रेट करता है. तो ऑयल का वो काम नहीं है जड़ों को मजबूत करना. ऑयल का काम है बालों को कंडीशन करना. अच्छा. आपके बाल रूखे हैं, फ्रिजी हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो आप ऑयलिंग करिए, उसके बालों में चमक आती है. एक चीज होती है हेयर पोरोसिटी. आपका हेयर बहुत पोरस है, आपको ज्यादा ऑयल करना पड़ेगा, नहीं तो आपके बाल बहुत रूखे होंगे, टूट जाएंगे, ब्रिटल रहेंगे. बट अगर आप अच्छे से ऑयल करते हो उसको once or twice in a week, तो दे लुक ब्यूटीफुल. बट अगर आपको बॉल्डनेस है या आपके हेयर थिनिंग हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हर समय ऑयल लगा के भी रखें तो कुछ नहीं होगा, बस आप फंगस अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके. और मैं बॉल्ड हुआ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने तेल नहीं लगाया. मैं बॉल्ड हुआ बिकॉज इट वाज रनिंग इन माय फैमिली. प्रोबब्ली माय डाइट एंड ऑल वाज नॉट वेरी गुड, सो आई लॉस्ट माय हेयर एट अ यंगर एज देन व्हाट अ नॉर्मल पर्सन डज. Not because I didn't put hair oil. And hair oil, if you think about it, it's more of an Indian thing. Western world, nobody uses. But true, baldness is not more in them than because they have not used hair oil. बिल्कुल. तो ऐसा नहीं है कि ऑयल नहीं लगाने से बाल जाते हैं, but ऑयल लगाना यूजलेस भी नहीं है. अगर आप ड्राइनेस के लिए it's better. But again, adding to this question, lot of people start saying कि okay, you have seen कि हमारे जो फादर थे या फिर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, see how they used to do, इसलिए उनके बाल आज बहुत अच्छे हैं कि बालों में तेल लगाते थे. How? नहीं तो ये नहीं है. तो अभी भी बहुत लोग हैं जो नहीं लगाते बट अच्छे बाल है, तो सारा जेनेटिक्स होता है. सो इन सर्टेन फैमिली दे डू नॉट हैव हेयर लॉस. अब वो जो भी कर रहे होंगे, जो भी ऑयल लगा रहे होंगे या जो भी शैम्पू, those blessed people like शाहरुख खान, blessed with good hair, whatever he does, right, is good for hair. But that's not it. It's like कि मैंने आज केला खाया और बारिश हुई. Both are bad. I ate banana and it rained, but it's not there because I ate a banana. So they're totally different things. And our ancestors, like let's say a person who is bald today, his grandfather would have got bald, but at a later age. Because of lifestyle factors. Better diet rather than oiling. It's better diet, less stress. They're sleeping properly. They're sleeping on time. We are sleeping at 2 a.m. Which is very common. Which is very common. That's a modern lifestyle. We are eating whatever kind of food available of fertilizer, which was not in generations before. So they lost their hair in the 50s, 60s. बिल्कुल. We are losing our hair in 20s and 30s because the lifestyle factors are there. Also, human evolution is toward hairless bodies. Like our ancestors were more hairy. We are less hairy. बिल्कुल. Hair being a vestigial organ, जैसे appendix धीरे-धीरे छोटा हो गया. बिल्कुल. धीरे-धीरे हमारा future is baldness. But जब हम में सब दंगे होंगे, it will not be a problem anymore. Right now, it's a problem. Right. तो keratin smoothing से क्या kidney failure भी होता है?
नहीं होता नहीं है, हाँ। बट ऐसे रिपोर्ट्स हैं, Reports हैं। अच्छे लोगों में हुआ है. हाँ। सो कुछ दिनों पहले तक तो माई टेक वॉज कि आप केराटिन करा लो, इट्स ओके, थोड़ा बहुत हेयर फॉल होगा वो मैनेज होगा. पर इसे नहीं सोचना पड़ा इस बारे में. But then now there is a report of a lady who got 3 times kidney problems immediately after the keratin. बिल्कुल. Then it was tested in rat models कि वही सेम जो केमिकल होता है उनके स्किन पे लगाया गया, but their blood also showed amounts of those chemicals in the अच्छा. और उनके कुछ रैट्स की किडनी में भी ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स आए थे. तो ऐसे कुछ केराटिन में कुछ केमिकल्स होते हैं which may get absorbed and may cause kidney problems. राइट, वही बात है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस सिनेरियो है. सो अगर आपके बाल ठीक हैं, स्मूथ हैं, तो मत कराओ. बट इफ यू हेयर रियली बैड एंड रियली वांट टू डू इट, बिल्कुल. तो आप अच्छे सैलून से विद अ नाइस पैक यू कैन गो अहेड एंड डू इट. एक थोड़ा सा जो लेट्स से सेफ्टी फैक्टर आप कर सकते हैं, दैट हाफ अ सेंट आस्क द ड्रेसर दैट लीव हाफ अ सेंटीमीटर ऑफ द हेयर, अच्छा. एंड डज नॉट डायरेक्टली टच द स्किन. आप ऊपर से कर लो. ओके. दैट्स एन एडिशनल लेयर ऑफ सेफ्टी दैट यू कैन पुट. तो अगेन एक और चीज भी आती है, काफी लोग ना कलर कराते हैं बालों को. क्या वो भी प्रॉब्लमेटिक है? तो अगर तो उसमें दो मिथ्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ टू योर ऑडियंस. एक तो मिथ है, क्योंकि मैं खुद ही करवाता हूँ. और अच्छा मिथ है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सो एक तो मिथ है कि कलर कराने से बाल और सफेद हो जाते हैं. बिल्कुल. उस पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा. देखो, आपने कलर कराया कि बाल सफेद होने शुरू हो गए. बिल्कुल. वो हर साल इट्स गोइंग टू इंक्रीज. तो फिर वही choice. वो बढ़ेगा ही. आपने एक बार सफेद होना शुरू हुआ, अभी माय साइड लॉक्स आर वाइट, 5 years डाउन द लाइन माय अदर हेयर विल ऑल्सो गेट वाइट. दैट्स ह्यूमन एजिंग. राइट. बट अगर मैंने आज कलर कराया तो मैं सोचूंगा नहीं, मैंने क्योंकि कलर कराया था इसलिए हुआ. नहीं, दिस इज नेचुरल प्रोग्रेशन. कलर डज नॉट गो टू द हेयर रूट और किल द मेलानिन सिंथेसिस पिगमेंट. इट्स बीन प्रूवन. कलर इज जस्ट डाइंग द कलर. फिर जो नया बाल आएगा वो सफेद आएगा, वो नया बाल जल्दी दो. तो कलर से जल्दी वाइट नहीं होता. बिल्कुल. कई लोगों का कलर से बॉल्डनेस आ जाती है या हेयर फॉल हो जाता है. ऐसा नहीं होता, बिकॉज अगेन वो रूट तक जाके उसको इतना डैमेज नहीं करता. हाँ, जो हेयर ट्रीट हुआ है कलर से, उसमें डेफिनेटली उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जो वो चीज है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आते हैं. बिल्कुल. So you will see that treated hair are drier, they are more brittle, वो टूट इजली जाते हैं, उनमें स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं. बिल्कुल. तो जो आपने जिस बाल पे लगाया है वो डैमेज होता है, बट अंदर से जो नया बाल आ रहा है वो अनडैमेज्ड है. तभी आपको कलर 2 महीने बाद रिपीट करना. द इनर हेयर, न्यू हेयर इज अनटच्ड. सो बाल डैमेज, हेयर रूट डैमेज नहीं होते हैं, लेकिन बाल थोड़ा सा डैमेज होता है. I am thinking why it's very important to take advice every time from the doctor. Yeah, it has, because people are coming up with own things, right? its own things. And अब Instagram पे तो होता है कि unless you see something new, तब तक वो उतना वायरल नहीं होता. तो इसलिए sometimes facts get twisted. Which gym supplements are safe or which gym supplements are not safe? So again, this is a good question, very good question, because gym supplements are being used in and out. और हर तरह के supplement. And mind you, most of the gym supplements are not coming from pharmaceutical companies, not from a regulated sector. They are all coming from a totally unregulated sector, right? Except for whey protein or certain multivitamins जो regulated sector से आते हैं. Everything else is from unregulated sector. तो आपको खुद ही पता नहीं है कि उसमें क्या है. So my take is that plant-based proteins are totally safe. So if your diet has less protein, you can supplement it through plant protein. Good quality, it's safe. Whey protein is a bit dicey. So our take is that up to 1 scoop, that is 20 to 30 gram of whey isolate, is okay, health-wise and hair-wise also. Particularly if you want to take a protein post-workout, then whey, nothing like whey. So 1 scoop is fine. But we have seen that people who are too much into it, like vegetarians, को पूरा नहीं मिल पाता है, and they are taking 3 scoops to complete their 1 gram per kilogram body weight. But उनमें hair thinning ज़्यादा होती है, उनका hair fall ज़्यादा होता है. बिल्कुल. And ICMR recent guidelines also tell that our race should not be on very high doses of whey protein. अच्छा. और dairy protein है, inflammation हो सकता है हमारे body के अंदर. So apart from hair, it may not be great for our system overall. So should not be very high on whey protein. So these are the latest ICMR guidelines. Whey protein, in my opinion, is by and large okay under this limit. Creatine is another very popular gym supplement. Up to 5 gram is fine, and it has been tested. More than that may cause hair fall and hair thinning in susceptible individuals. Multivitamins, good quality, are totally okay. Your vitamin A, B complex, that is B12, they are totally fine. Good. Calcium, vitamin D, these are good. Overdose on it, but within safety limit, they are totally fine. Which are totally not okay are steroids. All kind of anabolic steroids are the worst thing that you are doing for your body and for your hair. And that is the prime reason why many gymmers or bodybuilders have less hair. Because of high levels of anabolic steroids. This thing तो ये है. Second is people are using a lot of pre-workouts.
nitro pre-workout. बिल्कुल. So high caffeine. So high caffeine is not good for your heart. Nitro is not good for your heart. And very high caffeine is not good for your hair also. So pre-workouts I'm totally against. And good trainers always tell that don't take it on a regular basis. And there would be days जब आप बिल्कुल lethargic feel कर रहे हो, then it's fine. then okay. बिल्कुल. Like once in 10-15 days, it's okay. But every day is not very nice. And also fat cutters. So things like Black Mamba and very strong fat cutters which have pseudoephedrine. So these are not good for your heart and not good for your hair. So the primarily gym supplements which are absolute no are anabolic steroids, pre-workouts and fat cutters. Things which are okay to use are 1 scoop whey protein and under 5 gram creatine, and multivitamins are okay. Many new products are coming into the market, right? Which says that we can get 10,000 new hairs in 3 months. Yes. Is it true? Yeah. No, this is absolutely not true. Again, there's nothing and that can... अगर ऐसा होता फिर बचा क्या? फिर कुछ हो गया, जादू हो चुका है वहाँ पे. So as abhi like just 10 days back, a very senior journalist messaged me about these things and telling me, do you recommend it? I said, no, we don't recommend it. I said, that's good, because our ministry, there's a ministry called Central Consumer Protection Authority, CCPA. So they are very active against these fake products, because hair loss is a problem and young people are facing it. So people are willing to spend money. And there are people who hard earn money and with not much limited means, they're spending a lot of money on these fake products. So CCP is going to come very hard on these fake products which have these fake claims. Abhi fake claims aate kahan se? So you may have heard that after delivery ladies lose hair, after COVID recovery lose hair. So and then they come back. So us dauran, even if I apply water on my scalp, that I'll see 3 months later I have more hair on my scalp because I lost chunk. तो फिर तो पानी से भी बाल हो. तो वहाँ से ये लोग स्टडी करके they start making these claims and then fake marketing के through आते हैं. ये marketing है सारा. Fake marketing है. That bubble is going to burst because now the ministry is active. So the bubble is... How this hair patch and hair transplants are different? They're totally different things. Like hair patch is a wig. पहले हम उसको wig बोलते थे. अब थोड़े से छोटे, थोड़ा सा in a more sleek design aspect, smarter way, and then it's called a hair patch, which is artificial. On a bald head, we stick a kapda which has hair, sewn into it. So that's a hair patch. Hair transplant is a surgical procedure wherein your own hair roots are taken from, good roots are taken from your body and planted inside the skin of your bald head, which grow a natural hair. So hair transplant is naturally growing hair. Hair patch is a wig that you paste. एक आपने मुझे भी recommend किया PRP. Is it a magical treatment? No, so again a very good question, because PRP is very popular. Popular these days. It's not a magical treatment. And like we are trying to convey this message to our videos, and good that you asked this question, because PRP is not a magical treatment. PRP is a supportive treatment. Though it's a clinic based treatment, though there is a cost involved, though it is an injectable, in general perception ये होता है कि या तो महंगा है तो better होगा, और अगर injection है तो गोली से तो बेटर होगा. ऐसा नहीं है. So it's a different route of action जिसमें आपके बॉडी के growth factors we are injecting to strengthen your hair follicles. उसके stem cells थोड़े से better हो रहे हैं. Okay. But it is not tackling the root cause of baldness in most of us, which is DHT. So उसके लिए we use certain medications which are more effective. But PRP is a good and safe add-on to your main treatment. Okay. And what are the myths you come across very frequently? आपकी लाइन में. So बहुत सारी myths हैं. कुछ funny myths भी. वही funny में ही बिल्कुल. BAM is there. So a very common myth is masturbation and hair loss. Very common myth, and many young boys, because baldness is happening at a younger group. So many young men ask me that probably because I masturbated 3 times over the past month, probably that's why I'm losing hair. Or is it safe? So I said it is totally safe. Well, masturbating is safe. It's a natural process. Activity as natural as intercourse. So masturbation has no downside to your body. But still people come with this question. Because वो है that like वो ब्रह्मचर्य वाले concepts आता है. Brahmacharya is different. Brahmacharya is much beyond not masturbating. Because if you're not masturbating, you have nightfall anyways. Right. It's like urine, semen production is like urine. Right. उसको outlet चाहिए. बिल्कुल. So brahmacharya is a totally different concept altogether. Agree. It has so many other things. Disciplined. Like you're keeping short hair. You're not so conscious about how the way you look. You're focusing on your goal. You're not distracted by things like movies, cooking, other pleasures of life. And not having intercourse is a part of that brahmacharya. But so
from that ये निकला है कि हाँ. उससे बॉडी पे वीकनेस आ जाती है. नहीं, when if having sexual intercourse बिल्कुल. does not weaken your body, बिल्कुल. masturbation also does not. बिल्कुल. एक ना बड़ा कॉमन क्वेश्चन है भी, और बहुत लोग मानते भी हैं कि प्याज लगाओ, लहसुन लगाओ, आपके बाल वापस ओके बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे वापस. ऐसा है? अगेन ये भी बहुत ही अच्छा, ये दिस इज अनदर अगेन पार्शियल मेथड जो चल रही है. बिल्कुल. देख फिर से, बॉल्डनेस, बाल उग नहीं, रूट नहीं उग सकती. बिल्कुल. जो मर्जी कर लो, रूट नहीं उग सकती. बट दीज आर नॉट यूजलेस थिंग्स. सो अनियन, रोजमेरी, कैस्टर ऑयल, क्योंकि रील्स पे आता है ना बार बार. हाँ, तो ये लगाओ बाल आ गए मेरे वापस. तो ये सब थोड़ा सा इफेक्ट होता है. इससे बीआरपी थोड़ा सा इफेक्ट है, लेकिन इतना बड़ा बना के बेचा जाता है. बिल्कुल. तो वैसे ये है कि अच्छी चीज होती है. अगर आप कर सकते हो तो करो. गुड टू डू. बिल्कुल. बट ये आपसे ऐसा कोई बहुत जादू नहीं करने, राइट? सो somebody has hair loss, let's say, and we have recommended certain medication after diagnosis. Use the medication. But on top of it, if you can apply onion juice twice in a week, it's great. Do that. But if you say, I will only apply onion juice because it's herbal, it's safe, and I will get great hair, that's not going to happen. So इसमें बोलूँगा कि चलो 2% रोल है, 3% रोल है. बट अगर किसी को मान लेते हैं, किसी को कोई घरेलू इलाज करना भी है, somebody want to go on that road, तो what you suggest that this can be helpful अगर आप ये try करें? Yeah, so if you are in the early phases of your hair thinning, again seasonal hair, early starts of hair loss, mild hair loss, then I say that apply onion juice 20 minutes about 2 to 3 times in a week as much as possible, and then wash your head because it leaves a very bad smell. Similarly, you can make an oil, a ghar ka oil with the base of coconut oil, mix some rosemary oil, mix some castor oil. Castor oil is nice for your hair roots also, but very difficult to apply. So mix some castor oil. You can some roast some methi and mix in that. And onion oil you can mix in that, and that you can massage on the scalp and leave it for maybe a couple of hours twice in a week. So these are mild hair stimulators. ये सब आप try कर सकते हो if you have early hair loss. और कई लोगों को इससे फायदा नहीं मिलता है. So Ayurveda, I believe, is a very strong sign, and this is a part of Ayurvedic treatment. तो ये बहुत time tested चीज है. बिल्कुल. But ये preventive ज्यादा है rather than cure treating. So if you have major problem, then this is too mild to be effective. But if you have early problems, then it makes sense that you start. I think again वो भी तो बात है ना, वो एज अलग थी, वो ये एज अलग है. मतलब हर चीज आप उस जमाने की अभी टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस समय ये ऑप्शंस नहीं, ऑप्शन थे. जो भी अवेलेबल था उसमें ये बेस्ट था. बिल्कुल आप करते थे. बिल्कुल. अब देयर सो मेनी बेटर थिंग्स. वही बात है, पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे. बिल्कुल. तो वो लोग देखो पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, कितना अच्छा होता था. आप देख सकते हो, इट्स नाइस. बिल्कुल. नाउ देयर सो मच एडवांस टेक्नोलॉजी दैट्स अवेलेबल, तो आप उसको क्यों नहीं ट्राई करते हैं? ट्राई करो. लॉट ऑफ पीपल आल्सो थिंक अबाउट दिस वे आल्सो कि oh, there are so many products in the market, but they're very expensive. We can't go for it. But आप कैसे रिकमेंड करोगे? 200 रुपए की भी चीज़ आती है, 2000 की भी चीज़ आती है. इन बीच में आप ये खरीद लो, आपकी काम आ जाएगा. जरूरी नहीं, don't look for the higher end. Yes. So again, this is like a very relevant thing because हमारा ये जो सेगमेंट चल रहा है, हेयर केयर, स्किन, हाँ बहुत चल रहा है. Every week a new brand is coming with something extra, and the prices are getting skyrocketing. बिल्कुल. पहले 400, फिर 800, 1000. So अब लेट्स से शैम्पू की बात करें फॉर एग्जांपल, तो हमें एक हेड एंड शोल्डर में मिलता है, वेरी नाइस शैम्पू बाय द वे, 150-180 रुपीज, और वी गेट अ वेरी फैंसी समथिंग कमिंग फ्रॉम अब्रॉड 2000 रुपीज. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों में. यू विल सी द लेबल, टर्न इट, यू विल सी द इंग्रेडिएंट्स, एंड इफ यू रीड इट, 99% they are the same ingredients, right? So what you are paying extra is for a very nice bottle, sometimes eco-friendly bottle, which is good for somebody who can afford it and do his bit for the ecosystem, or recycled bottle, and the endorsement, maybe Ashwarya or somebody is endorsing, so you're paying for the fee because ultimately the consumer has to pay. Right. So a very expensive fancy bottle may not be better than a normal Head and Shoulder or Dove shampoo. Then there are what we call herbal shampoos or less chemical shampoos, which is a different ballgame. Again, so यहाँ पे there are so many herbal brands which Rita, Shikakai, everything. बहुत सारे हैं. But again, if you turn on the label, they'll say Rita, Shikakai 0.01%, 0.8% in a shampoo base. In a shampoo base एक word में निकल जाता है. But that shampoo base is all the chemicals. Sodium lauryl sulfate, all the parabens. That is that shampoo base. Is there? That is the shampoo base. But वो herbal हो जाता है because उसमें 0.1% Rita है. So वो उस पर नहीं चलती. Of course, if you have very sensitive scalp or very dry hair, then you will go for what we call pH balance shampoo. बिल्कुल. Sulfate free, paraben free shampoos. They do not give you very nice cleansing. झाड़ू नहीं बनता, तुम्हारा clean feel नहीं होता.
but they are mild. They are less damaging to a dry scalp or a dry hair. But for an oily scalp, oily hair, it doesn't matter. You use a Head and Shoulder, it's fine. Head and Shoulder does not pay me. No conflict of interest. It's just a common, most popular shampoo brand, and it's totally okay. Even just apply Lifebuoy on your head. That's fine. That's fine. It will make your hair a bit dry. You can apply a bit of serum, but सारे shampoos are basically soaps. बिल्कुल, क्यों पहले भी ऐसा था ना, पहले लोग सोप ही लगाते थे, ये तो शैम्पू अभी इंट्रोड्यूस हुआ है. तो सोप इज ऑल्सो फाइन. लेकिन यहाँ जब एक मिथ होती है, अरे आप लाइफबॉय लगाओ वो बेटर है, क्योंकि हमारे दादाजी तो लाइफबॉय लगाते थे तो उनका देखो हेयरफॉल बाद में हुआ. अब तो शैम्पू खराब होता है, ऐसा नहीं है. Shampoos are softer soaps than Lifebuoy, obviously, but it's not a huge difference. एक वो भी तो है, अब लोग कहते हैं कि अरे आप ज्यादा शैम्पू यूज मत करो, गंजे हो जाओगे. ये भी बहुत बड़ी मिथ है. और जो है कि कुछ तो बोलना है, और मतलब nothing problem. I tell you why the problem is. Lot of people come on the social media platform where you can what do you call? You have to educate people. Yes. But they are putting myths in the market. So see, so you are an influencer. I think influencers have a big role now. बिल्कुल. Because they can divert minds of young people in either direction. Right. It's influencer responsibility कि whenever they're talking something, read about it. Right. And not just talk for the shareability of the content. Because many influencers like yourself, they're coming out that no, we have to give authentic information. And we are making good content, not just because it's shareable. बिल्कुल. Because negative becomes viral बिल्कुल. rather than positive. तो वो वहाँ पे influencers की वो आना चाहिए कि what are you talking should talk sense. Because now I'll tell you an example. Our association, Dermatologists Association, has taken cognizance of many influencers who are promoting steroid creams as very nice fairness cream. My God. Because there are creams like Betnovate and etc. which have been used since ages, which are proper steroids which we give for eczema. But skin lightening is a side effect. And that is being in India promoted as a fairness cream. And there are many influencers who come that, see, this is a 20 rupees tube and gives you great glow and fairness. Use it. I'll give you a take on this in a very harsh reality of today's podcasting. तो फ्रेंड ऑफ माइंड कॉल्ड मी अप एंड ही सेड ओके दिस गाय इज गेटिंग वेरी ट्रेंडिंग, ही इज अ डॉक्टर, आप क्या करो इन्हें बुला लो और पॉपुलैरिटी सब एकदम उड़ जाएगा. बट मैंने बोला उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है उस आदमी की, है ना. तो आज के लोग ना राइट लोगों को ढूंढने अच्छा बस ये ढूंढ रहे हैं बस मार्केटिंग हो जाए. मार्केटिंग हमने बोला हमारा प्लेटफॉर्म मार्केटिंग थोड़ी, जैसे आपने बोला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ शो ऑल्सो टू गेट authentic people on the show. Exactly, this is like influencers, and our government and Modi ji has done such a big influencer event. Which is great. That is because influencers are as important as media, not proper mainstream media. बिल्कुल. Because हमें जितनी information अब चैनल से मिलती है. बट आप अग्री करते हैं इस बात को, आजकल कोई भी कुछ भी बोल रहा है इंस्टाग्राम पे? टोटली अग्री करते हैं. हम लोग देख के हंसते हैं, हमारे ग्रुप पे लोग फॉरवर्ड करते हैं, देखो ये सब क्या बोल रहा है. तो क्या कर सकते हैं? बिकॉज अब फैक्ट अब आपका ये कि वी आर फेयर टू से एनीथिंग अगेंस्ट दैट, और बिकॉज वी स्टार्ट गेटिंग ट्रोल्ड. Suppose a very popular influencer has told about this steroid cream fairness. Some of our doctors tried to comment on that reel or video that this is not right, this is a steroid and this is how. Got badly trolled. True. कि भाई तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पैसा बनाना है, इसलिए तुम इस सस्ती चीज को करा पढ़ो. And these are steroids, eczema cream, and there's a thing called topical steroid damage face. So अब you will land in trouble, but this is what's happening. एक लोगों ने पानी पीने की टेक्निक को भी बालों से जोड़ दिया कि आप खूब पानी पियो, बाल अच्छे रहेंगे आपके. देखो वही कुछ बोलना है. इनफैक्ट जब सुन के देखो कितना अच्छा लग रहा है. इफ एज ए लेमैन अगर मुझे को पानी पियो बाल अच्छे, आपको लगेगा हाँ बिल्कुल क्या बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है. एक तो पहले मैं सब जगह शेयर कर दूं अपने ग्रुप में, एंड फिर मैं भी इसको यूज करूं. बिल्कुल कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं. बिल्कुल जो हम ये भी बात करते हैं 3 लीटर 5 लीटर पानी पियो, अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हाउ मच वाटर इज गुड. एवरी बॉडी हैज अ डिफरेंट नीड ऑफ वाटर. ऑब्वियसली समर्स हैज अ डिफरेंट विंटर. तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है. एंड ये सही है कि आप पानी कम पियोगे, आप डिहाइड्रेट होगे, आपकी बॉडी खराब होगी, आपके हेयर भी खराब होगी. इट्स अ लॉजिकल थिंग. बट सिर्फ उसको हेयर से जोड़ देना, इट इज फॉर द शेयरेबिलिटी ऑफ द कंटेंट. और एक मुझे एक आपको क्वेश्चन था इसमें, बट मुझे ना समझ नहीं आया. व्हाट इज हिजामा and hair growth? Yeah. Hijama, I have never heard of it. Hijama is such a popular thing. Hijama is a Unani technique. Like acupuncture is a Chinese technique. Hijama is a Unani technique of body healing. Okay. में क्या होता है कि they have nice vacuum cups जो आपके sore muscles पे वो लगाते हैं. Cupping आपने सुना? Cupping I have heard. Right. So the original name of cupping is Hijama. Oh, I see. Okay. So cupping, so the cupping is Hijama. Okay. So वो basically
सोर मसल्स के लिए होता है, लाइक वर्कआउट स्पोर्ट्स, बिल्कुल तो यू डू हिजामा एंड यू फील रिलैक्स, यू फील बेटर, द ब्लड फ्लो इंक्रीजेस। मेरे 2-3 पेशेंट ऑफ लेट मैंने देखे ऐसे सर पे ऐसे रेड स्पॉट लेकर आया, मैंने बोला क्या हुआ, हिजामा करवाया? यस सर हिजामा करवाया। हिजामा क्यों करवाया यहाँ पे? तो उसने बताया कि व्हेन यू विल डू दिस द इम्प्योरिटीज ऑफ द ब्लड विल बी सक्ड आउट एंड उससे फिर आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। मैंने बोला अच्छा। और एक ने एडवांस जगह पे हिजामा कराया, उसने बताया द DHT ऑफ योर ब्लड विल बी सक्ड आउट थ्रू हिजामा और आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, हिजामा इज बेसिकली वैक्यूम। मुझे फनी लग रहा है प्रोफेशन। तो बड़ा होता है, तो इसलिए एंड दिस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर, क्योंकि अगेन कुछ कंट्रोल में आया है ये हिजामा फॉर हेयर लॉस एंड एवरीथिंग। तो हिजामा इज अ गुड स्किन हीलर। आप करते हो, ब्लड फ्लो उस जगह का पड़ता है, सो द वो व्हाटएवर टिश्यू इज देयर, इट्स अ हीलर फॉर दैट टिश्यू। और द बॉल वो नहीं होता कि DHT निकल जाता है। बिल्कुल। अभी आजकल वो भी सुन में आ रहा है, कैसे नेम वो ब्लड सकिंग लीचेस, वो बिल्कुल आपका गंदा खून निकल रहा है भाई, नीच अच्छा आपका गंदा खून, अच्छा खून सब निकाल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दैट ओके DHT इज गेटिंग सक्ड बाय द लीच और बाय द हिजामा। So this is like not a very safe thing to do. So लोग ना ऐसा भी तो सोचते होंगे कि oh these are expensive doctors or these are expensive people who want to write very expensive prescriptions, but आप उनके लिए क्या बोलोगे? ऐसा नहीं है कि आप केवल पैसों से ही, महंगी चीज़ों से ही कोई आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। आप और माइल्ड अगर आप और थोड़ा सा नीचे आओगे तो अभी हम आपका सोल्यूशन ढूंढ देंगे। ये हम लोग बार बार इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइक व्हेन पेशेंट्स कम टू अस। जैसे आपने मुझे दवाई लिखी 1200 रुपए की है, हाँ बोले वो सस्ती है, ट्रीटमेंट हो रहा है उससे, तो फिर भी क्योंकि एक थोड़ा सा एक अच्छा ब्रांड है, वो और भी सस्ता है। जेनेरिक में हम जाएंगे तो और भी सस्ता वो मिल जाता है। बिल्कुल। इनफैक्ट जो मेरी फेवरेट मेडिसिन है और जो अच्छा ब्रांड आता है वो 5 रुपए की टैबलेट होती है, और उसकी अगर हम जेनेरिक लेंगे तो वो 1.5 रुपए की टैबलेट होती है। अच्छा, वर्क्स ग्रेट फॉर योर हेयर। वैसा नहीं है दैट ओनली एक्सपेंसिव थिंग्स वर्क फॉर योर हेयर, और इफ इट इज एक्सपेंसिव इट इज बेटर। इट शुड बी साइंटिफिक एंड इट शुड कम फ्रॉम अ लेजिट सोर्स, क्योंकि फेक मेडिसिन भी होती है। सो साइंटिफिक एंड कमिंग फ्रॉम अ लेजिट सोर्स इज गुड इनफ फॉर यू। बाकी आप चीनी जितनी डालते जाओगे मिठाई उतनी मीठी होती जाएगी। तो आप पैसे हैं तो यू ऐड PRP, यू ऐड लेजर, you add exosomes, you add growth factors. There are so many things that you can be added based on how much you want to, what kind of steps you want to take, how much further you want to go. But the basic things that we recommend are cheap. They are not expensive. They are proper scientific treatments. अच्छा, आपको लगता है मतलब दिस आई फील है ना, अभी वो रिसेंटली बड़ा प्रमोशन में भी आया कि इंडिया लेबल पड़ेगा, इंडिया है ना। डोंट यू फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? अब लोग ना पहले जब जाते हैं डॉक्टर बोलते अरे ये दवाई देखो ना कैसी है, आप लेबल पढ़िए ना। आप कोई चीज खरीद रहे हैं, आप लेबल क्यों नहीं पढ़ते हैं, है ना? डॉक्टर को भी यही बोलेगा ना भाई मैंने भी तो लेबल पढ़ के ही बताना है इसमें क्या क्या है। पैराबीन बता रहे थे, अब लोग सामान खरीद के घर ले आए, बोल रहे अरे अच्छा है ये तो हर्बल शैम्पू है, बट क्या आपने उसका, जैसे आपने बोला, क्या आपने उसके पीछे मुड़ के आपने उसके इंग्रेडिएंट पढ़े? तो आपको आधी इन्फॉर्मेशन आपका खुद होती। एग्जैक्टली, और लेबल पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप पढ़ो, एक तो हो गया आपने बस सुन लिया और ले लिया, बिल्कुल। सी आप पढ़ोगे, आप थोड़ा सा और डीप उस पर रिसर्च करोगे तो यू गेट ऑल द गुड इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। उसको आपको एक रीइंफोर्स कराना है, कंफर्म कराना, तो आप स्पेशलिस्ट से मिल लो। बिल्कुल। बिकॉज सी देयर वर सम हेल्थ ड्रिंक्स, सपोजिटली हेल्थ ड्रिंक दैट वर सो पॉपुलर, हम बचपन से पीते आ रहे हैं। बिल्कुल। बट नाउ अ वेरी गुड यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर उसने सारा निकाला है। ही गॉट बिग टाइम सूट, बट देन गवर्नमेंट केम थ्रू हिज प्रैक्टिस, क्योंकि उसने बताया फ्रैंकली लेबल पढ़ो, एंड उसने तो कुछ टेस्ट नहीं किया, उसने बस लेबल के बेसिस से बताया, राइट? व्हाट अ कॉमन मैन डू, what anybody does, but nobody did it for many years, but somebody did it, and then the fact he's not doing any rocket science, he's just doing what a common man can do. Yeah, anybody can do. Ketchup, it's not hardly any tomato, it's mostly pumpkin, तो कोई भी पढ़ सकता था। तो लेबल तो जरूर पढ़ना चाहिए before, at least if you are applying it on your body or if you are taking it inside the body, you shouldn't read the label. जी, अगर एक बड़ा डॉक्टर भी आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा है, it's always good to read and then you ask questions. अच्छा, ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स कभी आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के दें तो वो भी आपको, जैसा आप बोले, टेस्टिफाई कराना चाहिए कि भाई ये सही है कि नहीं है? हाँ, ऐसा भी जरूरी है। अरे अच्छा है। तो कई बार हम लोग एज ए डॉक्टर, कई बार डॉक्टर ऑफेंडेड हो जाते हैं, जब मैंने बोला है तो आप क्यों पूछा? ऐसा वो इसीलिए मैंने सवाल होता है, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, लाइक यू नो, बिकॉज ठीक है आपने लिखा, बट हो सकता है डॉक्टर से गलती हो जाए। बिल्कुल है, बिल्कुल। एंड पेशेंट हैज ऑल द राइट, लाइक कंज्यूमर हैज ऑल द राइट टू नो कि भाई ही इज गोइंग टू टेक, ऑफ कोर्स ही ट्रस्ट मी, बट ही हैज ऑल द राइट। मैं लेने से पहले आई रीड अबाउट इट, एंड इफ आई हैव एनी क्वेश्चंस आई विल आस्क यू। सो आई टोटली सपोर्ट इट दैट आप क्वेश्चन जरूर पूछो, एंड दैट्स व्हाट यू आर पेइंग, दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग, दैट्स व्हाट यू आर पेइंग मी, राइट? तो यू आस्क द क्वेश्चन, ऑफ कोर्स। व्हाई वी डोंट डू जनरल एनेस्थीसिया में हेयर ट्रांसप्लांट? तो देखो, अगेन हेयर ट्रांसप्लांट में
नीडल्स लगती हैं, एवरीथिंग लगता है, लोग डरते भी हैं कि क्या हो रहा है, बट वी हैव वेरी गुड लोकल एनेस्थीसिया दैट वी डोंट, जिससे आपको बेहोश नहीं करना पड़ता. अच्छा. वी जस्ट नम द स्कैल्प एंड इट इज डन. बट देयर आर मेनी पेशेंट्स हु आर स्केयर्ड ऑफ दैट आल्सो. देखिए हमें आप सुला दो ना, यस आई वांट जनरल एनेस्थीसिया and just do whatever you want to do. Then it's not that, okay? Because in any surgery, all the risk is of general anesthesia. More than cutting of the appendix, the risk is of general anesthesia. Okay. But there are surgeries जिसमें बिना general anesthesia के हो ही नहीं सकता. अच्छा. Right? Everything has to be shut down, and आपका intubate होना है, आपका breathing, everything is dependent on a machine. So there's something. But in most of the surgeries, we doctors are shifting away from general anesthesia. जैसे नीचे cesarean section spinal में होता है. बिल्कुल. The lady is totally awake, but she can't feel a thing because spinal anesthesia. Right. Most of the bone surgeries happen in spinal anesthesia. Right. Even brain surgeries happen in local anesthesia without a GA. तो जहाँ पे without GA possible है, वहाँ पे without GA ही होना चाहिए. And hair transplant we have such a good anesthesia, बिल्कुल, which lasts easily for 6 hours. तो मुझे आपको बेहोश क्यों करना है? Why do I need to put you on risk when you can go to the washroom, you can have your sandwich during the procedure? Why do you want to go behosh? So वैसे भी कोई खास पेन नहीं होता. And GA में there are too many risks in GA. That's why we don't recommend doing a hair transplant under general anesthesia. अच्छा, मैं फिर भी चाहता हूँ एक बार ना ये तो क्लियर करो, क्या क्या मिथ्स हैं जो आप चाहते हो क्लियर आउट ही हो जाए. हाँ, तो हेयर ट्रांसप्लांट की बात बिल्कुल बात करो. तो हेयर ट्रांसप्लांट सबसे बड़ी मिथ होती है कि मेरा तो ब्रेन डैमेज तो होना ही है. ऐसा नहीं होता. There is no link to brain and hair transplant क्योंकि ब्रेन आपका कवर्ड. Skull is the hardest bone of your body. बिल्कुल. जो हम दीवार पे जो ड्रिल करते हैं वो तक काम नहीं है. बिल्कुल. सो इट्स इम्पॉसिबल. जो हम जो पतले से सफायर ब्लेड यूज करते हैं या नीडल यूज करते हैं उसे खरोच भी नहीं लगने वाली स्कैल्प पे. सो द ब्रेन डैमेज इज आउट ऑफ क्वेश्चन. देयर इज नो ब्रेन डैमेज. सेकेंड इज बहुत महीनों तक सालों तक पेन होता है. ऐसा नहीं होता. पेन एक तो बहुत ही कम होता है एंड होता भी तो फर्स्ट वीक में होता है. बाइल नॉट सॉर्टेड एंड वी हैव वेरी गुड पेन किलर्स फॉर दैट 1 वीक. थर्ड, मेमोरी लॉस. तो यदि ब्रेन पे होगा तो मेमोरी लॉस होगा एंड क्या होगा, केमिकल जा रहा है. सो दीज आर ऑल सेफ केमिकल हैव बीन यूज्ड फॉर लास्ट 30-40 इयर्स बी मोर. और इसमें कोई मेमोरी लॉस वगैरह नहीं होता. फिर लोग कहते हैं कि नहीं नर्व्स हो रहा है तो आई पे ईयर पे डैमेज. देयर नो नर्व डैमेज इन हेयर ट्रांसप्लांट. मेजर नर्व डैमेज. स्किन नर्व्स कटती हैं तो 1 महीने में हील हो जाती है. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. अगेन वो क्योंकि 3-4 डेथ्स हुए थे तो उससे मेरा यही टेक है कि अगर मैं पूछा कि ड्राइविंग सेफ है, एयर ट्रैवल सेफ है कि नहीं. एयर ट्रैवल इज द सेफेस्ट मोड. बट प्लेन क्रैश हुए तो है, फिर भी होता है, कभी हो जाता है. रिसेंटली हो जाते हैं. बट वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट में अगर मैं आंख बंद करके करूँ, पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, तब शायद कुछ प्रॉब्लम है. सो डेथ्स एंड ऑल आर लाइक रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कॉम्प्लिकेशन. वेरी अनफॉर्चुनेट, अवॉइडेबल, बट वो गलत टेक्निक की वजह से होता है. एंड लगे ट्रांसप्लांटेड हेयर 2 साल में चले जाते हैं. दैट्स अनदर मिथ. ऐसा नहीं होता. इफ डन प्रॉपर्ली दे लास्ट फॉर मेनी इयर्स. सो इट्स नॉट दैट. एक और बहुत मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दैट मेनी पेशेंट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम आवर कंट्री फील कि वंस दे गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट डन उनके बालों की प्रॉब्लम खत्म. ऐसा नहीं. योर हेयर स्टिल नीड्स केयर. सो इफ यू हैव लाइक ऑडियंस पीपल हु नो अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट अंडरस्टैंड, इफ यू आर अ ग्रेड 3 बॉल्ड, आपका फ्रंट बॉल्ड है बट पीछे बाल है, आपने फ्रंट में ट्रांसप्लांट कराया, दिस एरिया इज सॉर्टेड फॉर एवर, बट योर बैक हेयर कैन स्टिल गो बिकॉज दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई DHT हेयर. उसके लिए अभी भी आपको करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर गॉड फॉरबिड किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आता है, बिल्कुल, उसको स्टेंट लगा, एक एंजियोग्राफी हुआ, एक आर्टरी ब्लॉक है, उस पर स्टेंट लग गया. बिल्कुल. अब क्योंकि वो स्टेंट लग गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा खाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी सेकंड आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, आपकी थर्ड आर्टरी ब्लॉक हो सकती है. बिल्कुल. तो आपको फिर स्टेंट लगेगा. तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और केयर करनी पड़ेगी ताकि वो जो स्टेंट लगा है उसकी भी लाइफ अच्छी चले और अभी कोई और आर्टरी ब्लॉक ना हो. सिमिलरली इन हेयर ट्रांसप्लांट यू नीड टू हैव गुड डाइट, यू नीड टू हैव गुड केयर, गुड प्रोडक्ट्स, सो दैट आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर की भी हेल्थ अच्छी रहे. बिल्कुल. एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट जिससे आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर भी बचे रहे. ऑफ कोर्स अगर नहीं बचा पाए तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ अ सेकंड और अ थर्ड ट्रांसप्लांट, बट इट कैन बी अवॉइडेड. अच्छा, आई हैव सीन लॉट ऑफ ब्रांड्स कमिंग, जैसे हम बात भी कर रहे थे, कमिंग अप विद लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, है ना. तो केवल मार्केटिंग के दम पे वो इतनी सारी चीजें बेच रहे हैं. डोंट यू फील दैट इट्स डॉक्टर्स का हो या गवर्नमेंट का हो, एक रोल होना चाहिए, मतलब जैसे आपको कुछ तो मॉनिटरेशन हो कि यार कुछ भी मार्केट में आ गया, उसने बोला ये लगा लोगे तो बिल्कुल बढ़िया हो जाए, कहीं ना कहीं फिल्टरेशन तो होना चाहिए. ये बिल्कुल होना चाहिए और अभी ये हो भी रहा है. हाँ, क्या कोई ऐसी है जो ये इसमें अपना रोल प्ले कर रही है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो प्ले कर रही है? यस. सो इसमें 3 लेवल पे होता है. तो लेट्स से कोई एक फेक प्रोडक्ट आया जिसने बहुत सारा परफॉर्मेंस एडवर्टाइजिंग किया, पम्प्स अ लॉट ऑफ मनी, एंड
अब आपको पता ही है कि क्या एडवर्टाइजिंग टूल होते हैं. If I search or even if I talk to you about hair, start reflecting. everything starts coming. So that's performance marketing. तो वो सब कुछ आने लगेगा. And hair loss touches such a sensitive nerve for many people that they want to try everything and anything. True. तो आया, ठीक है, 1,000 रुपए का खरीद लो, 2,000 खरीद लो, चलो यूज कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है. सो उसमें हमारा सबसे एक एज एन इंडिविजुअल डॉक्टर का रोल आता है. वी वर वोकल, हमारे पास पेशेंट आते हैं, बताते हैं भाई देखो इसका ये फैक्ट है, आप मत करो. बिल्कुल. वी ऑल्सो ट्राई टू पुट ऑन सोशल मीडिया, पर वही सर ट्रोलिंग हो जाती है, बिकॉज वी आर इंडिविजुअल्स. बिल्कुल. द कॉर्पोरेट्स आर ह्यूज. राइट. 1,000 लोग पीछे लगे. आर्मी है, मतलब ट्रोलर्स आर्मी है उनके पास. ट्रोलर्स बैठे हुए हैं, आर्मी है वो इनकी. बिल्कुल आर्मी है ना, ट्रोलर आर्मी. तो वो सारा शुरू हो जाता है. देन इट्स बिकम्स डिफिकल्ट. देन आर एसोसिएशन, व्हिच इज अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स निकलवाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, यू नो, लाइक आर एसोसिएशन इज डूइंग बिग टाइम फॉर फेयरनेस स्कीम्स particularly. And then there is the government. So I was just talking about this CCPA, Central what is it? So the CCPA, it's a Central Consumer Protection Authority. So it is now very active against fake products. तो ये मतलब कि ये बबल बहुत जल्दी बर्स्ट होने वाला है, because once government is in action, then scamsters और fakesters फिर ये ज़्यादा survive नहीं कर सकते, because now government will start taking action on the individual fake ads, and also एक बड़े large पे awareness campaign होंगे that our gullible population will get to know the reality of. My last question is, what do you want to say to those doctors जो आजकल किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और कुछ भी बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं रील शेयर करके आती है तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिसगाइड कर रहे हैं पब्लिक को, उनके लिए क्या बोलोगे आप? नहीं, और ये अनफॉर्चुनेट है, और कुछ लेजिट डॉक्टर्स भी जो इसमें जा रहे हैं. हाँ बिल्कुल. तो एग्जैक्टली लेजिट डॉक्टर्स भी जा रहे हैं इसमें. तो देखो उसमें अब इसके दो पार्ट्स हैं. वन इज, सी, conventionally doctor profession is considered a very serious profession. Of course noble, still noble, but very serious. That you have to dress in a certain right. You can't have a tattoo. Right. You have to behave in a certain way. तो मैं उसमें फिर कई हमारे ग्रुप्स में ये होता है कि यार that particular doctor was dancing on a reel or you know joking on a reel. I'm okay with it. Okay with it. Right. That's his or her personal choice. If that's his or her way of communicating their knowledge, is totally fine. Right? So इसमें doctors are also human beings. Doctors also want to have fun, and their way is their personal life. It's a personal life. But then when it comes to spreading wrong knowledge, right? Wrong knowledge, again, either for some personal financial gain, just for the shareability, or for shareability, that talk something really absurd, and because it has a bigger audience appeal of what you said, it gets shared, because you know you have started, you want to grow your followers and everything. Right. तो वहाँ पे I have problems, and most of us have problems. बिल्कुल. वो नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. At least not from people who are जिनकी बात सुनते हैं. आपने कुछ बोला है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है. बिल्कुल. उसको थोड़ा सा माइंडफुल होना चाहिए before saying anything, either for personal financial gain or personal popularity gain. So एक ना मैंने टर्म के मेडिसिन का कोई टर्म है वो सुना है कि मिनॉक्सिडिल नाम की कोई है. क्या है वो और उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है? तो मिनॉक्सिडिल के बारे में प्रॉपर बात इसलिए कर सकते हैं आप क्योंकि ये ओवर द काउंटर है. अब कोई भी ले सकता है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, तो वी कैन टॉक अबाउट इट. सो मिनॉक्सिडिल इज एन 8-year-old हेयर ग्रोथ मेडिसिन जो पिछले अराउंड 35 ईयर्स से यूज की जा रही है. अच्छा. हेयर लॉस. इट इज US FDA approved. It is approved in India, and we have been using it since like donkey years now. It's a mild medicine. It's not again something which is magical, but it has decent enough result. Okay. People in early hair loss hai. So we use minoxidil very, very frequently. Minoxidil is available both in the lotion form and in the tablet form. Abhi tablet form पिछले 3-4. You can use it regularly. Is it that? अच्छा. It is common and use it for years. Okay. Problem ये है that the moment you stop, you'll again have hair fall. So it's like gymming, right? It's like brushing your teeth. You have to keep doing it. Good. Does not matter that you have brushed your teeth for 10 years. Your teeth will be good. It's something like toothbrush. You have to use all your life. You have to use it. So if you have hair issue, you have to keep using it. Okay. People are scared about the side effect, but luckily there are no major side effects. अच्छा. Sometimes people don't like the smell of it, तो उनको headache होता है. अच्छा. Some people who have a migrainous tendency, उनका migraine बढ़ सकता है वो लगा के. It does make the hair a bit rough and all, तो shampoo ज़्यादा करना पड़ता है. So it's a bit messy to use. But if somebody has made it a part of his life, so it's good if you have hair issues. Okay. But again, if you ever stop using it, you will again have hair loss.
तो ये है Minoxidil. It's available in so many different forms. Alcohol based lotions, glycol based lotions, non-alcoholic lotions, lipid based lotions. बहुत सारे changes आ गए हैं depending on our patients क्या उसकी need है. We recommend them. And what is this Derma Roller? So Derma Roller is microneedling. Again has become very popular of late thanks to YouTube and Instagram. Because वही होता है कि ये Derma Roller करो, 200 रुपए का आता है, इसको करो बाल से. I get it. Okay. Many case studies and YouTubers who have been putting this. But problem ये ना वो सिर्फ वो Derma Roller दिखाते हैं, वो उसके पीछे जो मेडिसिन भी यूज कर रहे हैं, जो लोशन भी लगा रहे हैं, वो स्किप कर देते हैं. And this exciting thing they want to. Nice, it's like a sharp combing. इससे थोड़ा सा blood flow बढ़ता है scalp पे, which is good for your scalp health, which is okay for your hair, but small. It's a very subtle. Nobody tells the logic behind it. हाँ, बस Derma Roller करो. तो मैं I've seen bald people वो Derma Roller कर रहे हैं, खून निकाल रहे हैं अपना. They don't know how to the correct way. The correct way ये है, now that you have asked the question, कि अगर आप घर पे यूज कर रहे हो तो 0.5 mm या 1 mm का Derma Roller लो. बिल्कुल. Gently उसको करना है, खून नहीं निकालना है. Just make the scalp a little bit pink, अपना scalp करके basically blood flow बढ़ाना है. It will slightly strengthen your hair follicle. It's not going to grow any new root, impossible, but slightly strengthening of the hair follicle. अगर आप वही lotion serum यूज कर रहे हैं तो उनका penetration थोड़ा सा better हो जाता है if you're using the Derma Roller. But after 3-4 uses, discard it. क्योंकि एक तो इन्फेक्शन होगा अगर आप बार बार वही यूज कर रहे हो. Obviously, हाँ. ब्लंट होने से वो स्क्रैप करता है स्कैल्प को, जिससे बहुत स्किन में डैमेज होता है. तो आफ्टर 3-4 यूज डिस्कार्ड इट, बाय अ न्यू वन. आफ्टर एवरी यूज उसको अच्छे से धो के स्टेरिलाइज इट विद अ सॉल्वेंट. Dettol is the simplest one, but there are so much better things that you can do to sterile your Derma Roller. So it's okay to use. There is no bad effect of it, but ऐसा कोई बहुत मैजिकल नहीं होता था. जिनको अर्ली स्टेज पे इन 20s और एनी, अब तो किसी पे भी हो सकता है, इन अर्ली स्टेज दे स्टार्ट टू सी मेजर हेयर लॉस ना, उनको क्या करना चाहिए? So again, this is a very relevant in terms of diet also, in terms of what the regime they can follow. Sure. So again, this is a very relevant question because अब ये early 20s से hair fall हो नहीं लगा है लोगों को. बहुत common. Men and women. Right. So 2-3 चीजें करनी है, particularly if you're early. तो इतना when in early stages, that means you have fought it early, so there are no alarm bells and there are simple things that you can do जिससे hair better हो जाता है. So first thing is that you take care of your diet, because as we discussed, lifestyle has a major role. यहाँ पे just 2 technical terms. One is your genotype, जो आपको जीन मिले हैं, 90% role in your hair loss. And then there is a phenotype, जो आप external environment के through अपने body के साथ कर रहे हो. That phenotype, it has a 10% role. तो पहली चीज आपको improve करनी चाहिए with this lacking. Improve your diet. अब diet में क्या है? The main thing is protein. Your hair is your protein. तो आपका प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, at least 0.6 to 0.8 gram per kilogram body weight for your target. हाँ, बिल्कुल. And if you're working out and all, वो then you do 1.2 हो जाता है. So but at least 0.6 to 0.8 आपको target करना है. Because protein is the most important building block of your hair. Then comes micronutrients. Micronutrients में the most important is biotin, vitamin A, zinc, selenium. ये सारे micronutrients हैं. ये किन खानों में मिलता है? Vitamin A through all yellow things. So carrots, bell peppers, green leafy vegetables. Iron, green leafy vegetables, apple, pomegranate. Omega-3, omega-6 fatty acids through all the nuts. Best is walnut. Otherwise, chia seeds, flax seeds. All kind of seeds are very rich in omega-3, omega-6. Non-vegetarian में nothing like eggs. So eggs is a holistic source of protein, vitamin A, biotin, omega-3, omega-6, everything. Fish, excellent source of protein and omega-3, omega-6, and chicken for your protein. Baaki try to have a holistic diet, go low in carbs, because we have seen people who are very high in carbs, they have a thing called metabolic syndrome. You see, even if you do not have the genetics, your hair starts getting thinner. And be slightly low in dairy. Many people will again disagree कि दूध तो जमानों से चल रहा है, but now there is evidence. And even ICMR has said that too much of dairy is not great. And dairy is a little overhyped. इतना nutritional value नहीं होता है dairy में. अच्छा. And body में inflammation बनता है कुछ लोगों में. So go a bit low in dairy products and go a bit of low in carbs, particularly simple carbs जैसे sugar, आटा. हाँ, बिल्कुल. These are simple sugars. White carbs you should avoid. और अगर आपको कार्ब्स लेने ही हैं तो टेक गुड फाइबर डाइट, ग्रेनोला ले लो, आप मिलेट्स लो, ज्वार, रागी. These are better form of carb. So diet is important. Sleep cycle is very important because we all know 6 to 8 hours sleep is important. We agree. But what we don't know is the timing of sleep is also very important. Okay. Ideally, our body, genetically, evolutionary, is structured 10 to 2 is the best time to sleep.
10 to 2 is the best. 10 p.m. to 2 a.m. is the best time to sleep when your body recovers and your cortisol levels and melatonin levels are at their best. But वही हम नहीं करते हैं. Like 2 o'clock हम जाते हैं. So even if you are sleeping 8 hours, if you are sleeping at 3 o'clock in the morning and getting up at 11, that's not very conducive. Doesn't matter हमने बहुत अंधेरा कर लिया, we are using best of the cut. It's nice, it relaxes your mind. But that's not the best time of healing. Try to regulate your sleep cycle. Stress levels. So why our grandfathers lost hair at a very late age? We are losing hair at a younger age because of stress level. When you are under stress, your body produces more cortisol, and now it has been proven कि periphery में वो cortisol DHT बनता है. So DHT is not just through testosterone, it's through your stress hormones also, which causes hair thinning. तो पहले stress कब होता था? फैमिली में कोई हादसा हो गया, डेथ हो गई, या कोई बिजनेस से बहुत बड़ा लॉस हो गया, समथिंग, तो स्ट्रेस होता. अब नोटिफिकेशन से स्ट्रेस होता है. You see how many times a mobile notifies, even if it is not beeping, it is vibrating. And now if you have kept your phone, if it start ringing, आपका ध्यान चला जाएगा बिल्कुल इस टॉक से. So that's the stress that we are having 200-300 times in a day throughout. थोड़ा stress, and that is causing our stress hormones a lot. So lifestyle and stress levels are very important. Exercise. Now अभी थोड़ा सा मोटा हो गया, I will be doing good exercise. Exercising is very important. So be physically active. That creates a happy mind and a happy body, and which reflects on your hair. Habits. So smoking is something that's worse that you can do. See, again, if you're smoking once in a while, it's okay. It's not okay for your lungs, but still it's okay. Right. But if you're smoking even 2 cigarettes in a day, but consistently, it is directly killing your hair. So again, there would be, people give me example of Shah Rukh Khan, and chain smoker, why he's not losing? That's genetics. But if you have hair issues, he's Shah Rukh Khan again. And he's Shah Rukh Khan. We are not. But if we who have hair thinning and we start smoking, we'll start losing hair. So habits play a major role. So these things you need to change. That's the first. Then products. So if it is mild, use your home products as we have discussed. Try onion juice, try castor oil, rosemary oil. And if it does not help, then you seek professional advice. There are things which are more powerful. There are things which are extracts of these things and which work at the molecular level. And then there are medication like DHT blockers, Minoxidil we talk about. There are treatments which can be done for higher grades of hair loss and more severe hair loss. Products पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. Of course, expensive does not mean always going to be good. But use decent quality products which are not very drying to your scalp. You take care of your scalp oil once in a while, once in a week. If you're oily scalp, then it's not needed. But if you're dry scalp, then do oil once in a week. That's a nice thing to do. So all these factors, all these measures will reduce your hair fall intensity. Okay. But then there is diseased hair falls which are beyond these things. That's where we pitch in. So what are the hair treatments which can cause men's sexual problems? So see, again, there are certain medications that we use and which are very effective, but as a side effect, they can cause sexual problems in men, like erectile dysfunction, less desire. That can happen, and that we see it all the time. So that's why these are prescription medicines. We choose our patients correctly, and we recommend these medications when we feel that it is absolutely needed. And the benefit for the patient is much more than the risk. And these are reversible also. And these are the key factor. Right. So I tell them that the risk is low, but that's not the key factor. Because for a person, it's either 100% or 0%. But the key word here is reversibility. If you have the side effect of these medicine, the moment you stop, on itself, it will reverse back. You don't need any treatment because body will start producing the DHT hormones. Right. Again. So that from there myths come, because of course there are certain hair loss medication that can cause this problem. Bilkul. But then people have linked it to every hair loss treatment. So Minoxidil, hair transplant, PRP, these do not cause sexual problem. It is through DHT blockers. Okay. Who do you feel should go for the hair transplant or should not go for the hair transplant? Sir, thank you for asking this question, because hair transplant has become very popular. Last 5 years, hugely popular. Right. So everybody who has hair fall, I have 18-year-olds coming to me, just started 18 hair fall. Doctor, I want to do a hair transplant. Do you want 18-year-old? Just hair fall, hair is fine, but just maybe last month they had a bit of hair fall. I want a hair transplant. It's the permanent solution for my hair loss. I want a hair transplant. And some clinic has told me, yeah, we will do a hair transplant for you. I said, it's not like that. Hair transplant is only for baldness. So if your hairline has receded, if your forehead is looking broad,
that is the time when you start thinking of a hair transplant. And when their reasonable baldness has set in, then you do a hair transplant because medicine is not going to help you. But if you just started hair loss, you have minor hair thinning, then hair transplant is the worst thing that you can do. It will do more damage than damage. So don't do a hair transplant if your hairline has not receded, you are just losing some hair or you're just losing some volume, which we call hair thinning. Then we give medical treatment. We suggest lifestyle changes, which is a dietary change, not a hair transplant. So particularly in young patients, I ask them to come with your parents, then I counsel them properly. That goes. Hair fall का treatment नहीं है hair transplant. Hair fall का treatment है दवाई. Baldness का treatment है hair transplant. If you wanna mix कर दिया, so उन्होंने mix कर दिया. तो अगर hair fall होते होते baldness आ गई है, then you will do a hair transplant. बिल्कुल. और ऐसा भी तो सकता है, sorry I'm cutting it down, ऐसा भी तो हो सकता है कि seasonal हो आपका hair fall. हाँ बहुत होता है. तो यही तो होता है कि like monsoon, we are seeing a lot of hair fall patients. Hair transplant. ऐसे नहीं. So seasonal hair fall gets better on itself. If not getting, we'll treat it through medication. No hair transplant for it. Hair transplant is a treatment only for baldness and not for hair fall or hair thinning. Usually there are medicines. So that should be very clear. Also, there are certain people who are not fit for a hair transplant. Uncontrolled diabetics, uncontrolled blood pressure. Okay. This is the checklist. These are checklists that, okay, if you have it, you do, even though you want to do it, you will get benefit, but there are risks involved. So first let's tackle that. And then we'll do a hair transplant. It's an elective procedure. But by and large, who should do a hair transplant? A person who has a receded hairline, is not comfortable with that look, wants to restore the hairline, then it becomes a great treatment. Baldness is a choice. It's not a disease. Not treating is absolutely a choice. And good for them. Many people are totally confident they are unaffected by their baldness, which is great. But people who are, hair transplant is a very good treatment for them. It changes life. So, like when I chose this profession, dermatology and hair transplant, my father, who is also a doctor, he got very upset. He said, you have to take neurosurgery. Oh, you have to take or cardiology. Yeah, we save lives. What hair transplant, beauty and all this. Really? But after 5 years, I say, I may not be saving lives, but I'm changing your lives. It is life changing. Right. You know, young men who are like major problem. Right. And when they come, you know, that's a very major part also. Yeah. One loses the confidence at very early age. Absolutely. You know, it's see, balding happen at the age of 60. It's fine. Many people are not fine even with that and they want treatment, but it's still okay. But baldness happening in a 30-year-old. 30 years old. Is not fine for me. People who are confident, great. Right. But if somebody is not, then this is it. So that's why this is not life-saving, not mandatory, but it is life-changing. नहीं आजकल रिश्ते भी नहीं होते ना, तो इंडिया में तो बहुत, इंडिया में कोई जैसे स्थिति थोड़ी है जिसको देख के बोले गंजा है तो कोई बात नहीं. तो सबसे पहले मैट्रिमोनी में क्या जाता है? तो दिखाओ. फोटो दिखाओ. That's the first thing. Before, what's your profession? मेरा ये मानना है that Surat is lower, Sirat is higher. But the first thing is Surat. That's how the full has become. So things have become a bit important. So I've seen these days, even myself, I do this thing also. We use hair dryers, and some products also, hair care products also. Do you feel that these do thinning and any loss to your hair or क्या कोई problem create करता है, ऐसा है? I'm so happy that you asked this question because ये is a frequently asked question. लोग पूछते हैं इसके बारे में because these are commonly used things. Right. तो मेरा take ये है कि these things do not damage your hair root. We are sure about it that if you're using hair gels or hair waxes, hair dye, it's not damaging your hair root at all. इससे baldness नहीं आएगी. But like hair colors, they are damaging the hair that is being treated. तो जिस बाल पे आप गर्म हवा छोड़ रहे हो, the hot air dry, that hair is getting very dry. Okay. Easily breakable. Very frizzy. और अब वो ज़्यादा frizzy होते हैं, then you need more product. ठीक है? When you use gels, particularly high holding gel, तो उसमें ऐसे chemical होते हैं that damage the hair bond. तो आपके बाल को brittle करता है, आपकी hair की quality को खराब करता है. अच्छा. नया बाल जो ग्रो होगा वो अच्छा ग्रो होगा, बट उस समय जो बाल जा रहा है वो आप खराब कर रहे हो. तो माई टेक ऑन द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स इज दैट कि बेस्ट इज टॉवल ड्राइंग और नॉर्मल एयर ड्राइंग. आपको जल्दी करना है टू यूज द ब्लोअर बट इन अ कोल्ड सेटिंग. जिस दिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, यू आर गोइंग फॉर सोशलाइजिंग, यू वांटेड द हेयर टू लुक नाइस, पर्टिकुलरली लेडीज, देन वंस इन अ व्हाइल हॉट ड्राइंग इज टोटली फाइन. इवन आयरनिंग इज fine. But if you're doing it too frequently, आप चांस नहीं दे रहे हो बालों को रिकवर करने का. You are traumatizing your hair too frequently, जिससे अंदर के bonds खराब होते, जो split ends, hair brittleness, easily breakable.
शैम्पू करके निकले और बाल झाड़ू जैसे बन रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ ब्लो ड्राइंग। हाँ, बिकॉज व्हेन वी यूज वैक्स वो तो हम ऊपर रूट्स पे यूज करते हैं। हम ऊपर लगा रहे हैं, इसलिए रूट डैमेज नहीं होता, बट अच्छा। जिस हेयर पे लग रहा है वो थोड़ा बहुत डैमेज। ये दिस वाज आल्सो अ मिथ ना, लॉट ऑफ पीपल थिंक ओके तुम्हारा बाल ही निकल जाएगा पूरा। और देखो मैं बीच में बोलना चाह रहा था, नथिंग अगेंस्ट मदर्स, बट वो वहां से सब कुछ आता सब कुछ आता है। है। तू इतना जेल लगा रहा है तेरे बाल जाएंगे, तेरे बाल जा रहे हैं क्योंकि तू इतना जेल लगा रहे हैं, ठीक है, once in a while it's like okay to use, but overuse भी अवॉइड करना चाहिए। किसी ने मुझसे मतलब किसी ने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप क्या सोचते हैं कोई बंदा प्रोडक्ट बना रहा होता है, आदमी को मार दूंगा तो प्रोडक्ट बनाऊंगा। प्रोडक्ट बनाया, उसका साइड इफेक्ट आगे मार्केट में, उसका गलती नहीं है। हाँ। आ गया, हाँ, उनको उसको सही नहीं कर रहे, वो उनका प्रॉब्लम है। हाँ। बट कोई इस इंटेंशन से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता कि मेरे को ऐसा नहीं होता और ये सब ठीक ही होता। हाँ, सालों से लोग राइट। तो अब once in a while, मतलब अगर एग्जाम्पल ये है कि आप हमने बचपन में पैकेट में, अपने कॉलेज में खूब पैकेट में चाय पिए बिल्कुल। आज वो हाँ, इट इज नॉट ग्रेट। कभी कभी इस आप पी के कैंसर नहीं होगा बिल्कुल, बट आप लगातार पी रहे हो साथ तो आपका चांस बनता है कि that's because of social media again, because social media बाद में इतना सब कुछ है, the end result will be cancer only। हाँ, तो वो जाइए चाय पी ली प्लास्टिक तो end result will be cancer only। तो ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने भी चाय पी ली तो अब तो कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इट्स देयर बेस्ड ऑन डूइंग दैट, बट समटाइम मजबूरी है, राइट सकते हो। ऐसा मतलब कोई एक एज बैरियर भी है कि जहां तक आपको लगता है कि बाल अभी भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर एक कोई ऐसा लास्ट स्टेज आ गया अब इसके बाद तो बाल आपके, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अब बाल आपके ग्रो कर ही नहीं सकते। तो ये तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए वैलिड क्वेश्चन है। जैसे कई लोग आते हैं, कई पेरेंट्स आते हैं 4 साल या 5 साल के बच्चों को लेकर, इसके बाल अच्छे ग्रो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत हार्मोनल चेंजेस होने हैं, पर्टिकुलरली 17-18 ईयर्स ऑफ एज, जब आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, आपके हेयर में भी चेंजेस आएंगे। तो अगर बहुत यंग एज में आपको किसी भी प्रकार की हेयर इश्यूज है तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा हेयर, अनलेस कोई डिजीज होते हैं, एलोपेशिया एरियाटा या कुछ ऐसा, कोई भी चीज इतनी जल्दी मैनिफेस्ट नहीं करता। अभी बहुत टाइम है, 18-19 साल, जब चीजें बेटर हेयर बेटर होगा, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। बट दूसरा हेयर ग्रोथ बॉडी पे भी होता है, पर्टिकुलरली इन मेन, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। सो आवर बॉडी हेयर कीप्स इंक्रीजिंग ऑलमोस्ट थ्रू आवर लाइफ, एटलीस्ट 45 to 50 years of age। जैसे आपने देखा होगा कि बियर्ड starts growing at 17 to 18 at that time, and then peaks at around 30-35। इसके फर्दर बियर्ड नहीं होता, बट चेस्ट हेयर, अपर बैक हेयर, ये इसके एज के बाद भी आते रहते हैं, बिकॉज ये आने वाले टाइम पे भी टिल 45 to 50 ये बढ़ते चले जाएंगे। इन विमेन स्कैल्प हेयर ग्रोथ जो होनी होती है मोस्टली 13 to 14 years तक हो जाती है ना, आफ्टर दैट इट्स ओनली lessening with ages or with the environmental factors. But in women, body hair can increase after menopause, because then female hormones कम होते हैं, male hormones थोड़े से बढ़ने लगते हैं, तो थोड़ा सा facial hair, थोड़ा सा body hair बढ़ जाते हैं, तो वो growth can happen till 50-55 years of age. But scalp growth usually peaks at around 17-18 and then it declines. और यहाँ पे एक और question आता है, till what time you can lose your hair? So for most of us men, the peak age of hair loss usually is between 25 to 45 years of age. इसमें सबसे ज़्यादा hair loss, particularly patterned hair loss होता है। उसके बाद फिर ये speed slow हो जाती है। So if you have retained your hair, let's say till 45, उसके बाद एटलीस्ट मेल पैटर्न हेयर लॉस का कॉम्पोनेंट कम हो जाता है, फिर एजिंग के साथ धीरे धीरे जो हेयर लॉस होना है वो होता है। एक केस स्टडी है मेरे पास ना, क्या एक कोई लड़की है इसके पूरे ना बाल चले गए थे, बिल्कुल बॉल्ड हो गई थी मेरे ऐसा ना, तो काफी डॉक्टर्स ने बोला नहीं अब तो ये आपके वापस बाल नहीं आ सकते अब ऐसे देख रहे हैं। बट देन शी मेट अ राइट डॉक्टर, है ना, फिर उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, बट वो बाल वापस उतने ही घने हो गए। यस, तो क्या ऐसा भी है कभी कभार आपको सही कंसल्टेशन की बहुत जरूरत है? नहीं, बिल्कुल। कुछ लोग सोचते हैं हम अब गंजे हो गए, हमारा कुछ नहीं होता। ये आई एम सो हैप्पी आपने ये क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज जब हम बात करते हैं हेयर लॉस की या बॉल्डनेस की, हमारे मन में एक ही फिगर आता है, वो है पैटर्न और जेनेटिक वाला है, लड़के बॉल्ड हो रहे हैं। बट देयर आर सो मेनी अदर कॉजेज ऑफ बॉल्डनेस। ये जो आप एग्जांपल दे रहे हो, दिस इज एलोपेशिया एरियाटा टोटालिस। ओके, ये बच्चे, ये 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल में वो एक इसलिए मैं राइट। सो शी वाज अ किड, she was good age, मतलब हाँ, not 25, बिल्कुल right. So that can happen, and where she would lose every single hair of the scalp, maybe even eyebrows, बिल्कुल correct, सब जा सकता है। That is a disease called alopecia areata. इसमें दवाइयाँ होती हैं, sometimes it's steroid, sometimes it are some JAK inhibitor, तो ऐसी दवाइयाँ होती हैं which take care of the immunity, जो खराब सेल्स को किल करती हैं, आपके सारे बाल वापस आ जाते हैं, every single hair। ऐसा लगता है कुछ मैजिक हो गया है, विग हो गया है, बट दैट इज अ डिजीज हेयर लॉस कॉल्ड एलोपेशिया एरियाटा। तो यहाँ पे डायग्नोसिस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉट ऑल हेयर लॉसेज आर द सेम।
तो कई बार वही होता है ना, जैसे एज ए लेमैन या ऑन इंस्टाग्राम हमें लगता है हेयर लॉस, हेयर फॉल, बॉल्डनेस, बट डॉक्टर का रोल तब आता है जब आपको डायग्नोज करना है व्हाई क्या लॉस्ट हेयर, बिल्कुल, व्हाट इज द प्रॉब्लम, which is very important. द राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, once I tell you your diagnosis, हाँ. you can treat yourself. You will go on Google, alopecia areata, what is the treatment? हाँ. Male pattern hair You'll loss. figure it out. But we will tell you what you have. Do you have alopecia areata? Do you have scarring alopecia? Do you have female pattern or male pattern? And then, so first is the diagnosis, and then comes the treatment. Perfect. No umbrella treatment. Umbrella treatment, right? Yeah. Weird. So आजकल ना बहुत फैंसी भी है, और मैंने देखा भी है, वैसे मेरी भी काफी बियर्ड नहीं आती है कई जगह से, तो बहुत फैंसी हो गया कि लोग बियर्ड ऑयल लगा के बोलते हैं कि अब आपकी बियर्ड बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज्यादा उगने लग जाएगी. क्या ऐसा भी है? तो जो ओरिजिनल बियर्ड ऑयल्स आए थे, जो लेजेड बियर्ड ऑयल हैं, वो जैसे स्कैल्प के हेयर ऑयल आते हैं टू स्मूदन द हेयर, बहुत रफ दाढ़ी तो हाँ बिल्कुल 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 थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाएगी, दैट इज बियर्ड ऑयल. फिर वहां से अब हेयर ग्रोथ के बियर्ड ऑयल आ गए, क्योंकि हेयर ग्रोथ के जब तेल आते हैं सर के लिए, तो बियर्ड के लिए क्यों नहीं आएंगे? तो बियर्ड के, तो इट्स द सेम थिंग. So any beard oil that let's say claims or does improve the hair growth has this thing called minoxidil that we talked about. तो मैंने अपने तेल में, if I mix minoxidil, you will apply it to start seeing baby hair. अच्छा. Or if you have thin hair, it will start becoming thicker hair. So that is beard oil which has minoxidil or relevant something thing. Okay. If you do not have a beard, there you know it, you are 25 years of age और आपकी beard आ ही नहीं रही है, तो beard oil से कुछ नहीं होगा. Either you accept it, looks nice, but if you are concerned about it, so we do beard hair transplants. Oh, तेरी beard hair transplant. अच्छा. So we take hair from the scalp and we put it and make them a beard. My God, magical show. Interesting thing, we also do it for trans people sometimes. Oh, right. So female, they version. बिल्कुल. So we do a beard transplant there, and which is fine. But yeah, if you have little scanty beard, then these hair growth beard oils, which mostly have minoxidil or relevant something like jelly, so that you can apply, it may improve your hair quality. But primarily beard oils are just like hair oil of the scalp to soften the hair. So thank you so much for being part of Impact Stories, and I think we have asked many questions. Thank you so much for being on the show. Thank you.